क्या हुआ चैनल? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, ऑफ कोर्स यू शुड रिमेन ऑल द टाइम गुड। एग्जाम्स के लिए कहते हैं ना, यस, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। नो, आई डोंट नो, हमारे टाइम में होता था ये, वेरी ओल्ड प्रोवर्ब, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। सबसे पहले साउंड बॉडी चाहिए, फिर ही साउंड माइंड होगा। तो आजकल तो डेंजरस है। रिमेन फ्रेश, रिमेन ऑर्गेनाइज्ड, एंड देन देयर इज फन। एंड स्टडी को थोड़ा इंटरेस्ट से लीजिए। ये नहीं है कि आप सोचो यार ये मुश्किल है ना, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए। हाँ यार ये मेरा प्रोफेशन है, मेरे को आना है, बस दैट्स ऑल। चलो, what we were doing so far about the tackles and purchases. So I'll just go back on the board to refresh what we have done so far. Let me go to a better camera. So if you see what we have done so far, just again a revision. Purchase, if somebody says a purchase or tackle, तो आप उसको कैसे explain करोगे? How will you explain what is purchase or a tackle? Simple language. Anybody? The group of sheaves combined to make. Okay. Good morning, sir. Yeah, good morning Dipesh. Yeah. Anybody else? और थोड़ा बेटर कि परचेज टैकल है, हमें से आपके मन में क्या आता है व्हेन वी टॉक अबाउट परचेज टैकल? या गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग बेटा। Whatever comes to your mind, then only you will be able to express. सर वो एक तरीके से सर वो ब्लॉक और पुली टाइप का सिस्टम होता है। ओके, उस सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं? एनी सिस्टम which we use for मशीन सर। Yes, simple machine. So purchase or tackle is a, now actually problem क्या है, when we talk about machines, so we all think of big machines. Machine is anything smallest to smallest. Even a single pulley is a machine. A wheel is a machine. So purchase or tackle is a machine where, or again you can say, चलो machine को छोड़ के a combination of blocks. I hope blocks everyone know, a combination of blocks and ropes or wires where we can lift a higher weight, bigger weight by applying lesser force, isn't it? So that is what our purchase and tackles are. Now in these cases, there are 2-3 things. First we call the mechanical advantage. The mechanical advantage, we all know that we pick up a weight, we can lift a weight by applying less effort. So weight to effort. Mechanical advantage is just a ratio of how much weight you are lifting and how much effort you are applying. Second, आ जाती है आपकी velocity ratio. That also we have seen, velocity ratio of a purchase or tackle we can calculate how, by number of sheaves, and isn't it? So how many number of sheaves are there in my purchase or tackle? The velocity ratio is equal to n if the purchase is used to, if purchase is used to advantage or disadvantage? Sir, n+1 when advantage and n when disadvantage. Correct. So here is equal to n if purchase used to disadvantage and n+1 if purchase is used to advantage. तो ये थोड़ी सी चीजें हमने याद रखनी है and we will be able to solve. Now
third comes the effort. How do we calculate the effort? How much effort to apply on the rope or the wire when we have to pick up a certain amount of weight. So to calculate that effort, the formula is very simple. Weight plus N into N is the number of sheaves into W into friction percentage divided by VR, velocity ratio. So now I know the weight I am lifting, I know the N number of sheaves in my system, I know the weight W and friction per sheave, which is given in the question that it is friction is 10%, 8% per sheave or 10% of the weight per sheave. And the last is your efficiency. How do we calculate the efficiency of a machine? Now we have said this is a machine or group of purchase or group of blocks or combination of blocks where we can easily lift a weight. So उसकी efficiency calculate करने के लिए simple mechanical advantage divide by velocity ratio into 100. तो ये तो थे आपके basics for calculating, for finding out anything. Mechanical advantage, velocity ratio, efficiency जो भी हमने निकालना था. Now in this case, what we have done so far, ये तो हमें आ गया. This is we can do, this we can calculate. Now, when we use the purchase, what is basically purchase? Again is a combination of blocks. I have taken one block here, which has got say 2 sheaves, and I have taken another block, which has got another block with 2 sheaves. And if I use this, what we call a two-fold purchase to lift a weight. So इसकी hook में if I attach a weight, and then I can easily, this is the rope, this is the hauling part, and then this rope is rigged through in such a way that I can lift this weight easily. So we call it, we apply the effort here and we have the weight here. Weight is moving in this direction, effort moving in this direction, we can very easily calculate. Now यहाँ तक तो हमने कर लिया था, isn't it? I hope यहाँ तक any doubt? Up to so far we have done how to calculate the effort. This is equal to your weight plus NWF upon VR. So I can easily calculate if I am picking up 5 ton, 10 ton, I can calculate. So I hope यहाँ तक everyone is very thorough, clear. Any doubt on this? No. Yeah. Okay. No, sir. Yeah. Okay. Very good. Now the next part comes here. Instead of putting an effort on this hauling part, which is again there is a lot of load. So why don't we attach this? Now in this case, what we do? So we have a purchase which we made. Say I am using here simple gun tackle, 2 blocks, 2 single sheave blocks. Weight is attached here, and now I use this to advantage. I am going to heave on this and I am going to lift the weight. So advantage means weight is also coming up and your effort is also being applied in the same direction. So this is basically the ropes are moved through this. Now what do I do? To gain some more advantage, I attach this rope with another sheet. Say with another combination of blocks. इसकी हुक इसके साथ में, इस हुक के साथ I attach this system with another system to gain little more advantage. And this is again fixed here. Now this is again your, which tackle is this? Anybody? So luff tackle.
Yes, very good. Now this is my gun tackle. This is rig to advantage. And this is what you call luff tackle or watch tackle also we call sometime. This is rig सर to चीज सर पूछनी थी हाँ जी सर ये ऑलमोस्ट सेम है ना पुलिस सिस्टम जैसा ही है मतलब वी कैन से दैट Yeah, it's a pulleys only. Basically, this is a block. So block क्या होता है? It can be a wooden block, it can be a steel block, isn't it? So ये block के अंदर आपका how many pulleys are there? How many sheaves? So pulleys को normally we call sheave. We call it pulleys or sheave. So one block may have one sheave, one block may have two sheaves. It can have three sheaves. So it is single sheave block, double sheave block, triple sheave block. यस सर Okay. So यहाँ पे हमने डबल शीप ब्लॉक लगा दिया, उसके साथ हमने रोप वर्क के साथ कॉम्बिनेशन के साथ एक सिंगल शीप ब्लॉक लगा दिया. सो तब हमने ये सिस्टम बनाया, इसे हम लफ टैकल कहते हैं. यहाँ पे वी हैड टू वुडन ब्लॉक्स विद सिंगल शीप. इसमें भी सिंगल शीप था, एक ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक है जिसमें सिंगल शीप है. सो आई एम ट्राइंग टू लिफ्ट दिस वेट ऑफ से 10 टन. नाउ इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग दिस पावर, नाउ व्हाट डू वी डू? Now ये जो combination है, now this combination is, this is my weight to be lifted. Here I will apply effort E1 that I can calculate. Now this effort for this system, for the luff tackle, this will become the weight, isn't it? E1 will be the weight W for, or we call it weight for luff tackle. And similarly, this is a final effort I am going to pull on this rope and we will lift this weight. So this is becomes the effort E2. Now this system is again a combination of blocks basically. So I cannot show you far away. So this is one, we have deck, we tied up this block, we try to lift. इसके हॉलिंग, हाँ जी बोलिए. लेफ्ट टैकल भी सर एडवांटेज में इसमें अगर करते हैं जो दूसरा बनाया है लेफ्ट टैकल, उसको अगर एडवांटेज में करते सर, इसको एडवांटेज में करते हैं. नो सर, दोनों ही अगर एडवांटेज में होते. ओके, यू कैन डू दैट. दोनों ही आप एडवांटेज में भी लगा सकते हो. सो इट डिपेंड्स कि हाउ यू वांट टू, हाउ द क्वेश्चन इज देयर. सो यू कैन rig दिस सिस्टम इन एनी वे. सो इट डिपेंड्स आपने कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे क्या अवेलेबल है, what type of system you want to use. So आपको क्वेश्चन में anything can come. A gun tackle is rigged to lift a weight of 10 ton, or gun tackle is rigged to advantage to lift a weight of 10 ton, and the hauling part of gun tackle is attached to the moving block of a, or the single sheet block of a luff tackle. Calculate the efficiency, calculate the size of rope required for luff tackle, calculate size of rope or wire, whatever you are using, and calculate the efficiency of the whole system. So that also we can do. So these are the questions basically. Now we have done single, now we are doing in combination. So combination के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं? How do we proceed if I have this type of system or this type of question, that gun tackle rig to advantage, hauling part of gun tackle is attached to the single sheep block of a luff tackle, which is rigged to disadvantage. So वो आपको क्वेश्चन में दे देगा whether this is rigged to advantage or disadvantage, this is rigged to advantage or disadvantage. So this way we can finally, we have to find out the effort E1, and finally we have to find the effort E2. So final effort is this, to lift a weight of 10 ton. How much effort you will apply, then only I can calculate the mechanical advantage. Weight upon final effort. And when I have the mechanical advantage, then I can calculate everything. So इस system को these type of questions how do we do? यहाँ पे आपने देख लिया. In this case, first what we do,
we take this system, what we call the gun tackle here. Same, we know the value of W, example 10 tons. N is equal to 2. What is the VR? Velocity ratio of gun tackle? 3. Yeah. So velocity ratio is 2 plus 1. So bracket में हम लिख सकते हैं it is used to advantage. So n plus 1, 2 plus 1. आपको भी पता है आप क्या कर रहे हो. Examiner also knows what the candidate wants to communicate. That advantage, because number of sheaves is 2, it is linked to advantage, so it becomes n plus 1. So effort E1 will be equal to इस rope के ऊपर how much effort will come, how much load will come on this rope. So that we can calculate W plus MWF, this is percentage upon, we call it VR1. Can you do it on your calculators? How much effort, how much load coming on this rope? So ref कितना लेंगे? Yeah, friction we can take 8% or say 10%. Easy calculation के लिए friction 10% and factor of safety 6 standard. Sir 4. Very good. Okay, simple. So now I know here the effort E1 which will come, or the load on this part of the rope will be 4 ton. Now this 4 ton basically will become the weight for second purchase. Now for second purchase, if I have to calculate E2, so can you guys calculate how much will be the effort required for this? Again same, here I will calculate weight is equal to 4 ton, N is equal to 1 to 3. Now in this case, velocity ratio of left tackle will be, how much will be the velocity ratio of left tackle? 3. Correct. 3, it is disadvantage. So effort E2 will be equal to 4 plus N into 4 into 10% upon VR3. तो कितना आ गया effort E2? Sir 1.73. Okay, effort E2 is 1.73 tons. So ये effort जो है, now you can imagine to lift a weight of 10 ton, I have to only apply effort of 1.73. अब इसके ऊपर अगर पूछते हैं आपको यार what should be the size of rope, of nylon rope or any wire, we can talk about wire also कि 6/24 की find out 6/24 wire what size? Now if I have to calculate the size of wire, I know what is the breaking stress of 6/24 wire. Any idea? 6/24 का breaking stress क्या होता है? 20 t square upon 500. Very good. ठीक है, so 6/12, 6/24, 6/37. It is again 15d square, 20d square, 21d square. So this is the breaking stress. अब ये जो मेरा effort है, any effort, it is basically equivalent to safe working load. And I know safe working load is equal to breaking stress divided by safety factor. Now in this case, we are assuming safety factor to be 6.
isn't it? Now if I have to calculate the size of 6 by 24 wire, if I take the breaking stress which is equal to 20 d square upon 20 d square upon 500 and इसी के divide by 6, this becomes the safe working load. This should be equal to 1.73 tons. So can you calculate the? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देगा ये. Okay. सर आफ्टर 20d square 5/500 इसके बाद सर. Okay. So now we know that the formula for calculating the breaking stress of different wires, 6 by 12, 6 by 24, 6 by 37. The formula is 20 d square upon 500. Now this is the breaking stress. Now what is breaking stress? Now I cannot apply the breaking stress on any of the ropes. Breaking stress means अगर आपने उतना effort लगाया तो rope will part. So normally what effort we use safe working load. And how do we arrive at safe working load? The breaking stress of any wire or rope. Breaking stress of any wire or rope. This is to be divided by factor of safety. Now in this case the factor of safety is 6. Suppose आपके breaking stress आपने जो calculate किया इस formula से, suppose it comes 24 tons. Any, just for example. Now I cannot use breaking stress means इस rope के ऊपर 24 ton का load लगा तो ये wire टूट जाएगी. That is we don't want to work in such a machine. So there is a given factor of safety 6. That means you divide by 6. That means you apply 4 ton of load. Nothing will go wrong with the wire. There is no deterioration, no reduction in the strength of the wire. If we apply this of safe working load, we know how to arrive at safe working load is the breaking stress divided by safety factor. वो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा. If friction is so much and factor of safety is 6. ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं. Clear? So how do you arrive from breaking stress to safe working load? And second, जो भी हम effort लगा रहे हैं, that is always equal to the safe working load. अब मैं 20 d square upon 500 is my breaking stress. So यहीं पे लिखता हूँ 20 d square upon 500 is the breaking stress. So इसी को if I divide by 6, so I divide this breaking stress by 6. This becomes equivalent to safe working load. Now this should be equal to 1.73. And इस इक्वेशन से मैं d की वैल्यू निकाल लेता हूँ. 16.1. चलो जो 16.1 sir. okay 16.1. okay now 16.1 mm. तो आपका आंसर आ गया 16.1. बट अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करे तो आप कौन सी वायर यूज करोगे? Theoretically speaking, we will use the next higher up wire. Normally on the ships the wires are available even numbers, 16 mm, 18 mm, 20 mm like this. So we are talking about the ship, we are not talking about the shore industry. वहाँ पे हो सकता है 17 mm भी अवेलेबल हो. तो आपने कहना है कि 16.1 है तो 16 से कम नहीं मैं जाऊंगा if it is asked. Otherwise up to here the answer is I will use 16 point or the answer is 16.1 mm. But where it comes to using I will use 18 mm. Next higher up wire. कम नहीं करना आपको. तो 17 नहीं लिख सकते हैं. या 17 नहीं लिखना बिकॉज अगर आप 17 लिखोगे देन एग्जामिनर को लगता है कि आपने शिप में काम नहीं किया. So I want to convey to the examiner that I have worked on the ship. So you can write here one sentence. Since the wires are available in even numbers, so I will prefer to use 18 mm. So उससे क्या होता है कि examiner knows that this particular candidate has worked on the ship practically, so he knows कि ship पे wires क्या आती हैं. That is what the examination is. Isn't it? हम उसको यही कन्वे करना चाहते हैं ना कि यार हमने शिप पे काम किया है. 17 mm अगर आप लिखोगे तो हो सकता है कहेगा यार this guy has never seen the wires. ओरल से मैं आपको पूछ सकता हूँ 17 mm की वायर कभी रिसीव की थी? एंड फिर आपका आंसर आएगा सर मैंने तो टैंकर पे काम किया, हमने तो वायर रिसीव ही नहीं की.
then you will say कि आपकी that means practical training is incomplete. So why go into that thing? So you have received wires. Otherwise, normally I am telling you, yes, it's possible that maybe whatever in 2 ships or 3 ships, you may not have had the opportunity. Some ships work like that. Maybe tankers and all, you don't have much wires work. Not many of the cranes or derricks are there, so very less wires are received. It's possible. There's nothing, abnormal that you may not have received. But normally when you receive the wires, you see these wires normally come in this fashion. Assure every type of wire is available. Chalo, I hope. Any doubt, anything which you need me to explain again? All clear to everyone? Yes sir, clear. चलो गुड. एक एग्जांपल करते हैं दोबारा से, एक क्वेश्चन करते हैं. सो आई विल शो यू ऑन योर स्क्रीन्स, सो यू सी दैट क्वेश्चन. सर ओड नंबर ही क्यों आता है सर वायर जहाज पे? इवन नंबर, ऑड नंबर नहीं आता. इवन नंबर सर. या इवन नंबर नहीं आता बिकॉज wires we use on the ships, they are basically used in this fashion 10, 12, 14, 18. so even number के लिए आपको स्पेशल वायर बनानी पड़ेगी. आप ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकती. फैक्ट्री में तो एनीथिंग कैन बी मेड. So if you have that wire of this thing, because mostly the equipment which is used on the ship, gangway, cranes, जो भी है, so they can calculate the basically the safe working load. So they know that इस size की wire चाहिए. Otherwise, if you ask for 17 mm, they will give you 17 mm. Yes sir. फैक्ट्री में तो मैं, if you are the owner of a factory, if you are manufacturing wires, तो जहाँ आप 18 बना रहे हो वहाँ 17 भी बना सकते हैं. मैंने आपको जैसे प्रैक्टिकली बताया है कि इफ यू गो विद अ वर्नियर कैलिपर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक आउट अ डिफरेंस बिटवीन 16 एंड 17 mm वायर. बट यहाँ पे तो मतलब पुराना रेफरेंस लेके ही सर मंगा लेते थे. या इट इज, इफ इट इज रिक्वायर्ड. अगर आपकी क्रेन मैन्युफैक्चरर इज सेइंग, सी हाउ वी ऑर्डर द वायर्स, we are not doing these calculations. Actually, if you have to ask for the wire for a crane, we go to the crane's manual. So crane manual is again made by the manufacturer. So he has calculated everything. He gives you the details. If he writes that your crane needs a wire of 21 mm, so you will ask for 21 mm. But basically, so far, jitne bhi maine 35, 38 years I have sailed, so we have seen all the time the wires are always even number. Okay, so how we order the wires? अगर आपको कोई पूछे कि सर आई विल गो एज पर द मैनुअल, इवन गैंगवे उसका भी मैनुअल है, उसकी भी रिक्वायरमेंट है, उसका वेट सबको पता है जिसने बनाया है. सो दे ऑल्सो नो कौन सा वहाँ पे टैकल लगा, कौन सा परचेज, कौन सा पुली सिस्टम वहाँ पे है, एंड व्हाट साइज ऑफ वायर इज रिक्वायर्ड. सारी कैलकुलेशन, इट इज ऑल कैलकुलेशन. देख के नहीं होता है. एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड ऑन द शिप व्हेन द शिप इज बिल्ट. So वहाँ पे जितना साइज लिखा है, नॉर्मली यू विल सी 12 सर्टिफिकेट सर. हाँ जी, जो वायर के जो सर्टिफिकेट, तो उसमें जैसे कि लिखा रहता है बट डाया नहीं लिखा रहता है. मतलब डाया दिया रहेगा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दिया रहता है. लिखा रहता है डाया सर. या अदरवाइज आपको क्या पता कि बट सर कुछ एक यूनिट होता है सर जिसमें 5 भी लिखा रहता है. जिसमें क्या लिखा होता है सर? 5 का सिंबल रहता है. 5 सिंबल बना रहता है सर. जो ये जो मैंने बनाया सिंबल, ये वाला सिंबल होगा. नहीं सर, याला तो सर समझ गया था. एक और सर एक सिंबल होता है. बच्चे, दिस सिंबल इज नॉर्मली यूज, दिस इज इंडिकेटिंग डाया. ये डाया के लिए यूज होता है. सो जैसे हम आजकल हैश लिख रहे हैं, हैश को हम क्या यूज करते हैं? नंबर, isn't it? Instead of writing number, Yes sir. so I write #1, isn't it? Yes sir. Similarly, जब मैंने लिखना है कि डाया 20 mm, तो मैं इसको लिखता हूँ 20 mm. दिस इज अ वेरी सदियों से चली टर्मिनोलॉजी इन इंजीनियरिंग. दिस मीन्स 20 mm डाया. दिस 5 sign means dia. It is just a terminology. It is just taken that we use it like that. कितनी चीजें हम ऐसे यूज करते हैं. ओके,
So आपके सर्टिफिकेट में भी when he writes 20 mm means this is means the wire का diameter is this, not the circumference. Wire has got two things, one is diameter, one is circumference. Now I don't want to go back to the physics की what is the relation between dia and the circumference. No? ओके सर। और सर जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ रहता है जो यूजुअली दिया रहता है, बट एज पर द मैन्युफैक्चरर इनका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ तो वही रहता है, बट उसका मतलब थोड़ा ज्यादा ही रहता है ना स्ट्रेंथ, उसके आगे ही जाके टूटेगा ना। Yes, yes. See, what I explained you, I don't know, अभी I forget कि आपको थे किसी को, बेसिकली जब आपके पास वायर्स मैन्युफैक्चर होती हैं, when the wires are manufactured in a factory, उसके बाद उनका टेस्ट किया जाता है। एक्चुअल टेस्ट जो है, सो ये फार्मूला तो एक इट्स लाइक ए एम्पेरिकल फार्मूला। ये फार्मूला ऐसे डिवाइस हुआ है कि इट गिव्स यू इक्विवेलेंट रिजल्ट्स, बट एग्जैक्ट ब्रेकिंग स्ट्रेस किसी भी वायर या रोप का it is taken out by a destructive test, that is called destructive test, that is done in a factory। की वायर जो बनती हैं वो कंटिन्यूस लेंथ में बनती हैं, ब्रेक में नहीं, कंटिन्यूस 1000 मीटर 2000 मीटर वायर जो मशीन बना रही हो कंटिन्यूसली बनाती जाएगी। उसके बाद उसमें से काट के आपके 200 मीटर या 220 मीटर जितनी आपको चाहिए वो कॉइल्स बनाए जाते हैं। जब ये वायर मैन्युफैक्चर होती है देन दिस अथॉरिटी, जैसे आपका शिप का सर्वे होता है, क्लासिफिकेशन सर्वेयर्स जो हैं वो आते हैं, वो देखते हैं, वहाँ पे भी इसी तरह से सर्वेयर्स जाते हैं, गवर्नमेंट के ऑथोराइज सर्वेयर्स जाते हैं जो टेस्ट करेंगे। सो व्हाट दे डू, दे टेक अबाउट 2 मीटर ऑफ वायर, 2 मीटर ऑफ वायर को एक मशीन में डालेंगे, देयर इज अ मशीन, टेस्टिंग मशीन, जहाँ से वो दोनों एंड्स को क्लैंप कर लेगा, एंड देन दे स्टार्ट पुलिंग ऑन द वायर, नॉट विद द हैंड, विद द मशीन, एंड उसके ऊपर गेज लगी होती है, हाउ मच लोड द मशीन इज अप्लाइंग। सो एक स्टेज आएगी, यू कीप ऑन पुलिंग, वन स्टेज पे द वायर ब्रेक्स। सो जिस लोड पे वायर ब्रेक्स, सो ही हैज नोटेड, सो सर्वेयर हैज नोटेड कि हाँ भाई दिस वायर जो इसकी क्वालिटी है, इसमें कितना कार्बन था, इसमें कितना मैग्नीज था, कितना इसमें क्या क्या जो भी प्रोडक्ट डाला हुआ था, हाँ भाई इसकी स्ट्रेंथ कितनी है जी 20 टन, 20 टन पे ये प्रोडक्ट टूट गया, या 19 टन पे दिस वायर इज ब्रोकन, सो दैट इज टेकन एज द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर और रोप और एनीथिंग। देन ही इश्यूज अ सर्टिफिकेट कि भी दिस वायर इज ब्रेकिंग एट 19 टन। फिर उसके ऊपर आपका सेफ्टी फैक्टर आ जाता है, विच इज अगेन बाय द गवर्नमेंट बॉडीज कि भाई दिस टाइप ऑफ वायर जिसका ये मटेरियल है उसके लिए सेफ्टी फैक्टर इतना होगा, 5 या 6। सो कहाँ पे यूज होनी है, लॉट ऑफ फैक्टर्स कम इन डिसाइडिंग द सेफ्टी फैक्टर। वायर शीव्स में यूज होनी है, बोरिंग के लिए यूज होनी है, कहाँ पे यूज होनी है। सो वहाँ पे भी है कि इस सर्टिफिकेट पे ही वो आपको दे देगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6। दैट मीन्स कि अगर 24 टन में इट इज ब्रेकिंग, so I will apply only 4 ton, that is a safe working load, because they take lot of stresses come, lot of things come onto your wire, like आपका प्रोपेलर शाफ्ट, उसको इतना थिक क्यों बनाया जाता है, क्योंकि वो यूजुअली जब भेजेंगे स्ट्रेस उनका तो अपने आप ही वो होते कम होते रहेगा ना सर। यस, कम नहीं होगा, उसके ऊपर स्ट्रेस कितना आता है, जब प्रोपेलर घूमता है तो स्ट्रेस कैलकुलेट होता है, बट सर्टन स्ट्रेसेस यू कैन नॉट कैलकुलेट। तो फिर वो कहते हैं भी अच्छा 10% एक्स्ट्रा रख दो और इसकी थिकनेस 10% बढ़ा दो, बिकॉज सर्टन स्ट्रेसेस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो इसके लिए आपका जो ये सेफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी है कि भाई क्रेन से उठाना है, कभी जर्क भी आएगा, कभी झटका भी लगेगा, कुछ भी होगा, तो इसके लिए दिस थिंग्स टेक केयर ऑफ ऑल योर सेफ्टी फैक्टर। अभी 24 टन पे वायर टूटनी, मैं 4 टन उठा रहा हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला, कितना भी जर्क भी कर लो, बट नॉट दैट कि यू स्टार्ट जर्किंग द क्रेन्स टुमारो, isn't it? So this is what you have to understand। फिर ये formulas हैं which also give very equivalent value as compared to the breaking destructive test। okay, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, तो उसको लिखिए, उसको try to solve it and see where how much you have understood। So this is basically the question, I hope all of you can see it। कैमरा सेटिंग चेंज कर देते हैं। इसको लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, सो इट बिकम्स गुड नोट्स
फॉर रेफरेंस आप अपनी लैंग्वेज में जैसे भी शॉर्ट हैंड में लिखते हो। क्वेश्चन लिखिए, पढ़िए, उसने क्या पूछा हुआ है, क्या दिया हुआ है। सर ये लास्ट लाइन का क्या मतलब है? वी आर ऑफ द सिस्टम इज अ प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल वी आर। या जब आपने एफिशिएंसी निकालनी है, isn't it? Now when we are going to calculate the efficiency, so efficiency will be the weight lifted to the final weight. So efficiency क्या हमारी mechanical advantage upon velocity ratio, वो तो एक टैकल की थी। Now there is a combination of tackles, so what do we do? So यहाँ पे जो आप VR यूज करोगे that will be VR1 into VR2. So denominator में आपकी दो velocity ratio आ जाएंगी because there are two tackles involved. Okay, so this is called the product of individual VRs of each tackle. लिख लीजिए, बाकी कीजिए, then I'll come back to the board and I'll show you.
So effort is इसका लिखिए 3.39 question. tons. 3.39, what is that? Effort, isn't it? Effort required to lift the load. Final effort, Yes, sir. 1.632. इसका बच्चे पहले स्केच बनाइए. देखिए अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है स्केच की, देन आई विल शो यू द स्केच. Luff tackle rig to advantage. Now luff tackle is one twin sheave block, one single sheave block. सर फाइनल आंसर क्या है? 1.552. 1.632, I think final effort. How much you got? Effort E1. So 5.55. You got 5.55. Okay, 1 plus 3 into 12 upon 100, 12%, and 536 15. सर 5.1. Okay, first effort E1 is your 5.1. Yeah, 5.1 is correct. Yes. Yes. 15 ton, luff tackle 3 sheaves. We are 4. .1. So 5.1 becomes the weight for your next tackle, gin tackle. Now gin tackle is 3 sheaves, 1 block of 3 sheaves, 1 block of 2 sheaves. Yes, sir. Effort 1.632. Very good. So once you have the effort, next he is asking you the effort required to lift the load by this system. 1.632 आ गया. Efficiency of the system. Again we lost mechanical advantage. Now please be careful. जब यहाँ पे अपने mechanical advantage निकालनी है, 15 is the weight and effort will be the final effort, 1.632. That will give you the mechanical advantage. Divide by velocity ratio of luff tackle into denominator VR1 into VR2. Sir, final efficiency 45.95%. Okay, 45.9.
ठीक है, सो सबसे पहली चीज आपकी स्केच, प्लीज लुक एट दिस. सो द स्केच ऑफ फॉर दिस क्वेश्चन विल बी like this. Your left tackle is here, one single sheep block and one double sheep block. Now since it is rigged to advantage, बच्चे किसी का mic on है or somebody is trying to say anything? सर 15.6 का diameter required. Okay, so now you know 15.6 mm की आपकी वायर चाहिए, तो 6 by 16 का 20. 16 point. We will use 16 mm. Okay, so answer is 15.6. और आप एक लाइन भी लिख सकते हो, I will use 16 mm wire. Both are correct. देखा ना, उसने लिखा है मिनिमम साइज ऑफ 6/24 वायर विच कैन बी यूज्ड. सो 15.6 की तो है ही नहीं मेरे पास, शिप में नेक्स्ट वायर जो 16 mm, सो आई विल यूज 16 mm वायर. ठीक है, सो सबसे पहले बच्चे स्केच देखिए. सो अगर आपका स्केच बन गया तो आधा क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाता है. थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी है सो दैट यू कैन मेक दीज स्केचेस स्लाइटली नीटर. रनिंग हैंड से नहीं बनाने. सो दिस इज अगेन 2 डायमेंशनल. स्ट्रेट वे यू शो दिस ब्लॉक्स लाइक दिस एंड देन द हॉलिंग पार्ट ऑफ दिस इज अटैच्ड विद द हुक ऑफ दिस ट्विन शीप ब्लॉक ऑफ द जिन टैकल एंड देन इट इज रिग्ड. एंड ये आपका डिसएडवांटेज, जिन टैकल टू डिसएडवांटेज. एंड देन इसके नीचे आप अपने आंसर और सॉल्यूशन लिखना शुरू कीजिए. एनीबडी, एनी प्रॉब्लम? कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है? नो सर. ओके, वेरी गुड. अब आपके जो स्टेप्स हैं वो कैसे आएंगे? नाउ सी दिस वेट 15 टन एंड 3 लेफ्ट टैकल हैज 3 शीप्स, सो आपका n हैज बिकम 3. VR of watch tackle rig to advantage 3 plus 1 is equal to 4. Effort E1 basically W plus NW into friction divided by velocity ratio. So आपका 15 plus 3 into 15 into 12% divided by 4, 5.1 ton. So please use your one pen. एक मैंने आपको different pen use किया. Do not try to use red pen. MMD exams में red pen नहीं use करना कभी भी. Now this effort E1 becomes the लोड फॉर योर सेकंड परचेज. जैसे हमने फिगर में देखा, यहाँ पे जो एफर्ट आ रहा है, नाउ दिस परचेज हैज टू पुल दिस मच लोड, जो यहाँ पे आ रहा है 5.1 का, becomes a load for second purchase, and second purchase is rigged to disadvantage. That means weight 5.1 and 5 VR5. आपका 1.632 is the second effort, or the effort on the gin tackle, hauling part of the gin tackle. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Okay. So next, efficiency of the system is mechanical advantage divided by the product of velocity ratios into 100% efficiency के लिए. And mechanical advantage we know is load divided by effort. तो आपका mechanical advantage क्या आ गई? 15 divided by, यहाँ पे mistake होने के chance है, 15 divided by 5.1 नहीं करना आपने, 15 divided by final effort 1.632. Please remember this. So mechanical advantage divided by VR4 and VR5 into 100, so 45.95%.
Similarly, breaking stress for gin-tackle wire, अब चाहे वो सेफ वर्किंग लोड को सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी आपके पास ब्रेकिंग स्ट्रेस आ जाएगा। और ब्रेकिंग स्ट्रेस को इफ आई डिवाइड बाय सेफ्टी फैक्टर देन आल्सो आई गेट द सेफ वर्किंग लोड। सर एक बार ये वाला वापस रिपीट कर दो सर, मैकेनिकल एडवांटेज वाला। क्या मैकेनिकल एडवांटेज जो आपने लेनी है, मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड डिवाइड बाय एफर्ट। हाउ मच लोड वी आर पिकिंग अप 15 टन and in this case the effort will be the final effort. If you see the sketch, ये मेरा load है 15 टन and this is the effort, this effort you have to apply. So यहाँ कितना effort है मेरा 1.632, that means actual मैं 1.632 का effort लगा रहा हूँ to pick up this load. So मेरे को इस पूरे system की जो efficiency है that will be load divided by this effort. Okay. 15 divided by 1.632 will give you mechanical advantage divided by the product of velocity ratios. एक टैकल की VR 4 है, एक टैकल की 5 है, so 4 into 5 into 100 आपके पास 45.95% is the efficiency of this system. सर ये जैसे 20d²/500 जो है वो याद करना पड़ेगा सबका या फिर दिया रहता क्वेश्चन? नहीं बच्चे, आपको याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए फॉर रोप वायर। तो आपकी थी ना रोप्स के लिए क्या है, मनीला, पॉलीप्रोपिलीन, टेरेलिन, नायलॉन। वहाँ पे था 2 3 4 5 इज इट 2d², 3d²। तो उसको कैसे याद करते हैं, कैसे याद रखते हैं आप? कोई बनाया हुआ थंब रूल? ऐसा तो नहीं बनाया। सिंपल है, आई डोंट नो, मैं अपने टाइम का बताता हूँ। जब हम कैडेट थे तो हमने उस टाइम से बनाया था, मेरे पापा तेरे नाना, MPTN। मेरे मनीला के लिए M, P के लिए पॉलीप्रोपिलीन, नेक्स्ट इज पॉलीप्रोपिलीन, मेरे पापा तेरे नाना, 2 3 4 5। तो याद रहेगा मनीला, पॉलीप्रोपिलीन, टेरेलिन, नायलॉन। तो ऐसा शॉर्टकट बना लेना चाहिए, नहीं याद करने को आसान है। आई डोंट नो, 40 साल सर ऐसे भी बन सकता है ना, मेरी पीली तेरी नीली करके। हाँ जैसे आजकल जैन सर ने बताया था, मेरी पीली तेरी नीली। whatever you feel, जिस वे हमें तो तुमसे याद है। सो थोड़ा ऑब्सीन नहीं होना चाहिए ताकि आप किसी के सामने ना बोल सको, बट ठीक है। अदरवाइज मेक दिस थंब रूल्स। शिप लाइफ में है कि यस, कोई भी शॉर्टकट जैसा भी है, सो दैट व्हाटएवर वे यू कैन रिमेंबर। वायर्स के लिए नहीं है, वायर सिंपल है, 6/12, 6/24, 6/13, 15, 20 एंड 21। कोई बात नहीं, आप थोड़े एक्सरसाइज करोगे, क्वेश्चंस करोगे, बच्चे वैसे भी याद हो जाएगा। बट ये है कि यस, व्हेन यू आर आउट ऑफ टच फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बट ऐसा कोई थंब रूल होगा नो। चार्ट वर्क के लिए आपने बनाया हुआ कैडेट नहीं बनाया था ना, कैडेट एट डिविएशन। चलो ठीक है, हो गया यहाँ तक? एनीबडी, एनी डाउट? चलो वी टेक अ ब्रेक। ओके, चाय पी लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सर। या कब मिलते हैं? Okay, thank you, sir. 12:40। थैंक यू सर। या वेलकम। 12:40 और 12:45? 45
45 ठीक है 50 सर सर 45 45 सर 45 सर चलो ठीक है 12:45 प्लीज बैक, प्लीज बी बैक 12:45. कॉपी Yeah. थैंक यू सर Okay, welcome.